अस्सलाम वालेकुम। BSN 4 सेमेस्टर। आज हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस? तो राइट ऑप्शन है बी, टू लिटिल इंसुलिन। अच्छा, जब जिस्म में इंसुलिन की शदीद कमी हो जाती है तो क्या होता है, ग्लूकोज को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिसके नतीजे में क्या होता है, जिस्म चर्बी को तोड़कर कीटोन्स पैदा करते हैं। ये कीटोन्स फिर खून में जमा होकर एसिडोसिस पैदा करते हैं, जिसे DKA कहते हैं। Which type of diabetes is DKA most commonly associated with? तो राइट ऑप्शन है ए, टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में जिस्म बिल्कुल इंसुलिन पैदा नहीं करता, इसलिए ये DKA के खतरे से ज्यादा दो चार होता है। हाउ इज DKA टाइपिकली ट्रीटेड? तो राइट ऑप्शन है बी, विद रेगुलर IV इंसुलिन, IV फ्लूइड, पोटाशियम रिप्लेसमेंट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। What is the main difference between DKA and hyperosmolar hyperglycemic non-ketotic syndrome, जिसको हम HHNS कहते हैं? तो राइट ऑप्शन है ए, प्रेजेंस ऑफ कीटोएसिडोसिस। व्हाट इज द फॉलोइंग कैन प्रिसिपिटेट HHNS? तो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इन्फेक्शन, MI, स्ट्रोक। तो राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तमाम अवामिल ब्लड शुगर को इंतहाई ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे HHNS हो सकता है। Which age group is most commonly affected by HHNS? तो राइट ऑप्शन है सी, 50 to 70 ईयर। ये आमतौर पर बड़ी उम्र के टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट में पाया जाता है। हाउ इज HHNS टाइपिकली ट्रीटेड? तो राइट ऑप्शन है ए, with insulin, IV fluid, and potassium replacement. What is the typical presentation of diabetic ketoacidosis in a patient with type 1 diabetes mellitus? So right option है A, hyperventilation, acetone, breath odor, and blood glucose level above 20 mg per dl. How is the characteristic respiratory pattern seen in patient with DKA? तो right option है A. What is the typical blood glucose level range seen in patient with DKA? तो right option है C, 200 to 800 mg per dl. What is the characteristic electrolyte imbalance seen in patient with DKA? तो right option है C, hyperkalemia. What is the characteristic acid-base disturbance seen in patient with DKA? तो right option है C, metabolic acidosis. What is the typical presentation of hyperosmolar hyperglycemic non-ketotic syndrome in a patient with type 2 diabetes mellitus? So right option है B, slightly rapid respiration, no breath odor, and blood glucose level above 600 mg per dl. What is the characteristic respiratory pattern seen in patient with HHNS? So right option is C, slightly rapid respiration. What is the typical blood glucose level range seen in patient with HHNS? So right option is D, above 600 mg per dl. What is the characteristic electrolyte imbalance seen in patient with HHNS? तो right option है बी, हाइपरनेट्रीमिया। DKA में हाइपरकलीमिया और HHNS में हाइपरनेट्रीमिया। What is the characteristic acid-base disturbance seen in patient with HHNS? तो राइट ऑप्शन है डी, लेक ऑफ एसिडोसिस। और DKA में मेटाबॉलिक एसिडोसिस। What is the primary goal of treatment for hyperosmolar hyperglycemic non-ketotic syndrome? तो right option है B, to treat fluid loss caused by hyperglycemia. What type of IV fluid is typically administered to treat fluid loss caused by hyperglycemia? तो right option है both B and C. Isotonic, normal saline solution, hypotonic, half normal saline solution. What is the important to monitor serum glucose level and urine output in a patient with HHNS? तो right option है A, to assess the effectiveness of treatment. What is the primary goal of nutritional management in a patient with diabetes? तो right option है C, to maintain good nutritional हैबिट्स। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपर पैराथायराइडिज्म को डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।